All right, so let's start. I will quickly share my screen. I hope you guys can see my screen. Yes, So, which language you guys are comfortable in? English, Hindi, both. both? Yes. Okay, then we'll use mix up. Okay. So let's start with DevOps. So before jumping into DevOps, let's try to understand what exactly is DevOps, and from where this came into picture. So DevOps is a combination of two words, dev and ops. Okay, dev means development, ops means operations. Now let's understand what exactly mean by dev and ops. So dev means development. So whenever we start with an application, the very first thing we write application source code. That is the development process. So typical teams required in development operation is the developers who will write the code, the QA team who will be testing the code. Okay, and then we may have a build team as well that will be compiling the source code and converting into packages. So that is the development process. Then next we have the ops part, operations part. So in operation part, what we do, we deploy the build application to the target server or the target environment so that the our end users can access it. अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो फॉर एग्जांपल कि हम लोग एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, लेट्स से नेटफ्लिक्स. तो नेटफ्लिक्स में क्या करेंगे, सबसे पहले लोग अपने अपने सिस्टम में कोड लिखेंगे. लेट्स से देयर आर 10 डेवलपर्स और वो सब कोड लिख रहे हैं. किसी ने लॉगिन वाला पार्ट लिखा, किसी ने लॉगआउट वाला पार्ट लिखा, किसी ने सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट लिखा, किसी ने सर्च वाला पार्ट लिखा, किसी ने वो प्ले पॉज और क्वालिटी कम ज़्यादा करने वाला वो सब पार्ट लिखा, किसी ने लॉजिक लिखा कि भाई सबका पेमेंट टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा तो सबको मेल करो, वो सब. राइट, जब एक एप्लीकेशन डेवलप होती है तो उसमें बहुत सारे स्मॉल 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 कंपोनेंट्स होते हैं. राइट. तो वो डेवलपमेंट टीम, लेट्स से वो 10 डेवलपर है, वो सब मिलकर ऐसा कोड लिख रहे हैं. उन सब ने अपना अपना कोड लिख दिया. अब वो सब अपना कोड मर्ज करेंगे क्योंकि सिंगल नेटवर्क से लॉगिन लॉगआउट काम नहीं कर सकता. उसके लिए यूआई वगैरह भी चाहिए. तो वो फ्रंट एंड और बैक एंड का सब कोड मिक्स करके एक पूरी एप्लीकेशन बनाई जाएगी. ठीक है, अभी एप्लीकेशन तो बन गई, बट ये पड़ी है हमारे लोकल सिस्टम्स पे, लेट्स से, और या फिर हमारे पड़ी है गिटहब रेपोजिटरी में. अगर मुझे नेटफ्लिक्स एक्सेस करनी है तो मैं गिटहब रेपोजिटरी में नहीं जाऊंगा. नेटफ्लिक्स की मुझे कुछ यूआरएल जैसा चाहिए, या तो यूआरएल चाहिए या फिर कोई एप्लीकेशन चाहिए. वहाँ पे मैं लॉगिन करूंगा और मैं बैठ के मूवी मूवी या फिर वेब सीरीज देखूंगा. तो अब वो चीज इनेबल करने के लिए, ऑल दो हमारे पास अभी कोड पड़ा है, डेवलपर ने कोड लिख दिया और वो रेपोजिटरी में पड़ा है, बट जब तक आप उसको डिप्लॉय नहीं करोगे कहीं पे, वो तब तक एंड यूजर के लिए काम का नहीं है. एंड यूजर मीन्स हम जैसे लोग जो एप्लीकेशन को यूज करेंगे. सो टू डू दैट, दैट इज नोन एज द ऑपरेशन प्रोसेस. इन दैट ऑप्स प्रोसेस, we take the code from developers, we will build it, we will test it, and we will deploy it. So whenever we deploy it, the application will be made available to the end user. So deployment करते टाइम हम लेट से एक सर्वर है कहीं, उस सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे एप्लीकेशन को, और उस सर्वर से एक डोमेन नेम को करेंगे अटैच, जैसे www.netflix.com. तो फिर वो सर्वर और वो डोमेन नेम कनेक्टेड रहेंगे आपस में, और जैसे ही कोई हिट करेगा वो यूआरएल को, उसको एप्लीकेशन दिखेगी और वो सब लॉगिन कर पाएगा, देख पाएगा. और जैसे जैसे वो एप्लीकेशन में आगे बढ़ेगा, वो सब जो कोड, क्योंकि जो भी काम हो रहा होगा वो सब पीछे कोड से ही हो रहा था. राइट, यू ऑल नो दिस थिंग, राइट? Yes. यस. सो ये हो गया डेव एंड ऑप्स. तो यहाँ पे डेवलपमेंट टीम अलग है और ऑपरेशनल टीम अलग है. ऑपरेशनल टीम मतलब जो सर्वर क्रिएट करेगी, डेवलपर से कोड लेके उसको बिल्ड टेस्ट करेगी, और फिर उस कोड को सर्वर पर डिप्लॉय करेगी, और फिर डोमेन नेम वगैरह मैनेज करेगी. वो होगी ऑपरेशन टीम. अब हमारे ऑपरेशन टीम को अगर बोले कि भाई यू नो हाउ टू राइट कोड्स, और कोड में कुछ इशू आया है, तो उसको उसका नॉलेज नहीं होगा. उसको सर्वर का सब पता है कि हाँ सर्वर में स्टोरेज कम है या फिर इस सर्वर पे लोड ज्यादा है, वो सब वो काम कर सकता है, बट उसको कोडिंग का आइडिया नहीं है. ऑन दी अदर हैंड, डेवलपर उसको कोडिंग वगैरह सब आती है, बट उसको बोलेंगे कि भाई ये एप्लीकेशन को लेकर सर्वर पे डिप्लॉय कर, ही डोंट नो दैट पार्ट.
तो यहाँ पे दोनों के बीच में गैप है, दोनों को एक दूसरे की प्रोसेस नहीं पता है, करेक्ट। तो अगर हम कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो और वहाँ पे दोनों टीम इन्वॉल्व है, तो दोनों को एक दूसरे की प्रोसेस का पूरा आइडिया नहीं है, तो वहाँ पे दोनों के बीच में गैप गैप क्रिएट होगा। और कुछ भी कोई छोटा मोटा इशू होगा तो दे विल बी नो काइंड ऑफ ब्लेमिंग, दे विल से, अगर सर्वर पे एप्लीकेशन चली नहीं तो वो बोलेगा नहीं तो डेवलपर का इशू है, डेवलपर बोलेगा नहीं यार मेरे लोकल सिस्टम पे चल रही थी, ये कोई सर्वर का इशू है। तो हमें ये, और इसकी वजह से क्या होगा, टाइमलाइन जो है हो जाएगी डिले। जो एप्लीकेशन 1 महीने बननी चाहिए थी, ऐसे इश्यूज की वजह से वो 2 महीने लेगी, 3 महीने लेगी, और काम बहुत स्लो होगा। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इन दोनों का जो बीच में गैप है उसको ब्रिज कर दे, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाए और दोनों को कनेक्ट कर दे। सो हियर कम्स डेवॉप्स। डेवॉप्स या तो मान लो एक ऐसी प्रोफाइल है, या फिर ऐसा एक पर्सन है, या एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जो डेवलपमेंट टेक्निक्स को और ऑपरेशनल टेक्निक्स को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब दोनों चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएगी और दोनों सिंक हो जाएंगे आपस में, तो चीजें फास्ट मूव होगी। अब ये हो क्या सकता है, तो तो फिर कंपनी ने ये चीज रियलाइज की कि हाँ भाई, प्लस प्लस हाँ, वन मोर थिंग। तो पहले भी डेव और डेवलपमेंट और ऑपरेशन काम होता था, बट सब होता था मैनुअली। जैसे डेवलपर ने कोड लिखा, फिर वो लोग अपना कोड गिटहब पे पुश करते थे, फिर गिटहब से जो ऑपरेशनल टीम है वो मास्टर ब्रांच से कोड को डाउनलोड करती थी, फिर वो लोग अपने सिस्टम में उसको बिल्ड करते थे, फिर वो लोग उसको उसको मैनुअली टेस्ट करते थे, है ना, किसी लोअर एनवायरनमेंट में। मतलब उन्होंने www.testnetflix.com पे डिप्लॉय करके उसको चेक किया कि हाँ भी सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर उसको www.netflix.com पे डिप्लॉय करते हैं। तो वो लोग बिल्ड करते, वो लोग टेस्ट करते, वो लोग मैनुअली कोड को गाइड करते, कुछ इश्यू होता है तो डेवलपर से बात करते। तो ये सब प्रोसेस बहुत स्लो था। बट मानो कि चलो कि ये हो भी गया, बट आजकल के टाइम में क्या होता है कि एप्लीकेशन जो है वो रैपिडली चेंज होती है। इफ यू नो दैट वट एवर एप्लीकेशन यू हैव इन योर मोबाइल फोन, दे विल बी गेटिंग न्यूअर वर्जन एवरी 7 डेज और एवरी 10 डेज। मतलब हर 7 दिन में, या फिर 10 दिन में, या फिर 15 दिन में, या फिर मैक्स महीने में तुम्हें कोई ना कोई नया वर्जन मिलेगा किसी एप्लीकेशन का। लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का हर 15-20 दिन में एक नया अपडेट आ जाता है। तो नया अपडेट आ रहा मतलब वो लोग कुछ नए फीचर ऐड कर रहे हैं, और फीचर ऐड करके फिर सेम प्रोसेस वापस से होगी। लाइक डेवलपर कोड लिखेंगे नया फीचर का, उसको मर्ज करेंगे रेपोजिटरी में, फिर ऑपरेशनल टीम उस नए कोड को लेगी, उसको फिर से बिल्ड करेगी, टेस्ट करेगी, डिप्लॉय करेगी। अगर ये प्रोसेस बहुत लंबी हो, इसमें एक छोटे से डिप्लॉयमेंट को करने में 1 महीना लगे, तो व्हाट्सएप इतना जल्दी जल्दी फीचर अपने रिलीज नहीं कर पाएगा। क्योंकि लेट्स से 15-20 दिन डेवलप करने में लगेगा, महीना 1.5 महीना बिल्ड डिप्लॉय करने में लगेगा, तो 1.5-2 महीना तो इसी में चला गया। तो हर 2 महीने में अगर वो इतना टाइम लगाएंगे, तो वो लोग इतना जल्दी व्हाट्सएप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गया फीचर ऐड की बात। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोज करो एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, और उसमें कुछ बग है, उसमें कुछ इश्यू है कि उन्होंने कुछ नया चेंज किया था, बट उस चेंज की वजह से अब उनके मैसेज नहीं भेज पा रहे लोग। अब मैसेज नहीं भेज पा रहे लोग, तो ये इसकी वजह से तो मेन व्हाट्सएप का काम ही वही है, और मैसेज भेजना, और लोग व्हाट्सएप पे नहीं, मैसेज ही नहीं भेज पा रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन कोई यूज नहीं है। तो जैसे ही व्हाट्सएप को इशू पता चलेगा कि हाँ भाई लोग भाई मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं, वो लोग फटाफट से इसको फिक्स करेंगे और बोलेंगे भाई इसको आजकल के अंदर ही कर दो रिलीज। तो अगर हम लोग पुरानी प्रोसेस चले तो रिलीज करने में 1.5-2 महीने लगेगा, और इतना कोई इधर वेट नहीं करेगा, और लोग व्हाट्सएप से स्विच होकर टेलीग्राम चले जाएंगे या फिर कहीं और चले जाएंगे, और व्हाट्सएप का बिजनेस एंड हो जाएगा। तो ये चीजें बिजनेस को भी इम्पैक्ट करती है। तो बिजनेस को लगा यार एक्चुअल में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है ये, और इसको समहाउ हमको फिक्स करना पड़ेगा, ये नहीं नहीं किया तो ये हमारे बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे फिर डेवऑप्स इंट्रोड्यूस हुआ। अब डेवऑप्स में उन्होंने बोला कि भाई कुछ ऐसा मेथड निकाला जाए जिसमें ये जो लोग डेवलपर कर रहे हैं, डेवलपमेंट करने के इमीडिएट बाद से डिप्लॉयमेंट वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाने, इसके लिए बहुत सारे टूल्स बने, बहुत सारी प्रोसेस बनी, और कंबाइन इन सब प्रैक्टिस को कहा गया डेवऑप्स। और जो पर्सन ये सब चीजें जानता है उसको बोला जाता है डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है। तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर वी शुड नो बेसिक्स ऑफ कोडिंग,
बेसिक्स ऑफ कोडिंग मीन्स नोबडी विल आस्क यू टू राइट कोड, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि कौन सी कोडिंग को बिल्ड करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, नहीं कौन सी लैंग्वेज को बिल्ड करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, you guys will be knowing that to build Java application, we are using Maven tool. Have you ever heard about this? Harsh, Abhay, have you ever heard about Harsh, Mahipal, Yes. Abhay? Okay, Yes, yes. okay. So at least we should know कि कौन सी लैंग्वेज कैसे काम कर रही है और उसको बिल्ड कैसे करना है. Nobody will ask you know to write the code, to write the logic. That's not a role of DevOps. But at least you should know कि कोडिंग लैंग्वेज क्या होती है और वो कैसे काम कर रही है. ताकि कोई छोटा मोटा इशू आए तो वी कैन रिपोर्ट इट टू डेवलपर. So as a DevOps engineer, we should know basics of programming. Then we should know build and testing techniques कि भाई कैसे बिल्ड करते हैं. अगर जावा एप्लीकेशन है तो कैसे बिल्ड करना है, पाइथन है तो कैसे बिल्ड करना है, डॉट नेट है तो कैसे बिल्ड करना है. बिल्डिंग सबकी सेम है. अगर किसी एक लैंग्वेज की समझ में आ गई तो बाकी सारी लैंग्वेज की भी समझ में आ जाएगी. इट्स लाइक दैट. इफ यू नो हाउ टू ड्राइव अ मारुति सुजुकी कार, you will be able to drive Mahindra car, you will be able to drive Tata car, you will be able to drive Toyota or Hyundai car. The same process. So we should know basics of programming, we should know basics of build tools, and we should know basics of testing frameworks. Okay. So आजकल ऑटोमेटेड टेस्टिंग होती है. जब डेवलपर कोड लिखते हैं तो उस कोड को टेस्ट करने के लिए वो लोग टेस्ट केसेस भी लिखते हैं. तो वी शुड नो हाउ टू रन दोस टेस्ट केसेस. ठीक है, we will cover everything, but these are the responsibilities of DevOps. And DevOps engineers should be able to automate the build, test and deploy process. It means like when as soon as developer ने अपने सारे changes push किए GitHub repository में, GitHub repository में सारे changes upload किए, तब चीजें ऑटोमेटिक स्टार्ट होनी चाहिए. ऑटोमेटिक पाइपलाइन स्टार्ट हो जानी चाहिए जो बिल्ड करेगी, टेस्ट करेगी और डिप्लॉय करेगी. ठीक है. तो ये होती है एक डेवऑप्स इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज. इन सब के बाद डेवऑप्स इंजीनियर शुड आल्सो नो एटलीस्ट वन क्लाउड प्लेटफॉर्म. So we have three different cloud platforms. We have AWS, we have Azure, and we have GCP. So at least we should know one cloud platform for the deployment. Because nowadays every deployment happens on the cloud. Nobody is using on premises. So when we will go to the cloud, we will cover what is on premises and what is cloud. मेजरली भी So किस far पे काम हो रहा है कि ऑन प्रीमाइस पे ज्यादा काम रहता है या क्लाउड पे, क्लाउड पे? क्लाउड. हाँ. ओके. नो मतलब कोई जो भी मेजर न्यू कंपनीज है या फिर इवन जो जो पुरानी कंपनीज अगर कोई ऑन प्रीमाइसेस यूज करती है तो वो भी आजकल क्लाउड पे माइग्रेट होती है. तो जब हम क्लाउड का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब हम लोग ये सब कवर करेंगे भाई दोनों में डिफरेंस क्या है और क्लाउड पे हर कोई जाना क्यों पसंद करता है. ओके. सो वो एक अलग एजेंडा होगा. बट फॉर नाउ वी आर फोकसिंग कि व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर. So DevOps engineer responsibility is knowing automation, knowing basics of coding, knowing the version control like GitHub, and at least one cloud platform. Any doubts still here? No. Okay. ठीक है. तो ये तो हो गया DevOps जो आजकल चलता है. इससे पहले कुछ मॉडल यूज होते थे. I hope you have heard about this waterfall model. Have you ever heard about waterfall model? That's fine. If not, No. okay, that's fine. Not an issue. So SDLC. तो वाटरफॉल मॉडल को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. तो इसके नाम से पता चलता है कि ये एक लाइफ साइकिल है जिसमें सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप करना है वो सब रूटीन वगैरह लिखा हुआ होता है. तो जब भी एक एप्लीकेशन डेवलप होती है तो उसकी कोडिंग से लेकर उसकी टेस्टिंग से लेकर उसकी डिप्लॉयमेंट तक उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. जैसे एक ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है कि जिसमें ह्यूमन का जन्म होता है,
फिर वो जैसे चाइल्डहुड एज में होता है, फिर वो लेट्स से यंग एज में होता है, फिर वो मिडिल एज में होता है, फिर वो ओल्ड एज में होता है, और फिर वो मर जाता है। ये हो गया एक ह्यूमन लाइफ साइकिल, राइट? इतना समझ में आ रहा है गाइस? ये होती है ह्यूमन लाइफ साइकिल। यस। सिमिलरली सॉफ्टवेयर की भी एक लाइफ साइकिल होती है कि भाई पहले सॉफ्टवेयर कोड लिखा जाता है, तो उसमें जब कोड लिखे जाता है हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर अभी बच्चा है, राइट? फिर वो कोड लिखते हैं हम लोग, फिर वो कोड लिखते लिखते हम लोग उसमें बहुत सारे फीचर ऐड करते हैं, तो मतलब सॉफ्टवेयर मैच्योर हो जाता है, फिर कोड को हम लोग डिप्लॉय करते हैं, तो सबके वो सॉफ्टवेयर काम आता है, सब लोग उस पर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और जब सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती तब सॉफ्टवेयर डीकमीशन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे आज से बहुत साल पहले हम लोग जैसे गेम्स वगैरह खेलते थे, वो गेम अब नहीं आते थे, वो भी थे तो सॉफ्टवेयर ही, करेक्ट? यस। तो फिर बाद में डीकमीशन, तो वो एक पूरी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, उसको बोलते हैं एसडीएलसी प्रोसेस। ठीक है? तो एसडीएलसी प्रोसेस में आजकल डेवऑप्स यूज होता है, पहले यूज होता था वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि भाई जब भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट लिखी जाती थी कि हाँ भाई हमको किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे व्हाट्सएप बनाना है, तो मैं ना किसी डॉक्यूमेंट लूंगा, वर्ड डॉक्यूमेंट खोलूंगा, वहाँ पे लिखूंगा कि आई नीड ऐसी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें यूजर मैसेज सेंड कर पाए, यूजर फोटो सेंड कर पाए, यूजर वीडियो सेंड कर पाए, वहाँ पे इमोजीज वगैरह भी हो, यूजर एक दूसरे को कॉल भी कर पाए, वीडियो कॉल भी कर पाए। तो ये मेरी एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे ऐसी एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है? ये होगी रिक्वायरमेंट। अब फिर उसकी फिर हो जाता है उसका डिज़ाइन। भाई हम लोग जब मकान बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग ऐसा तो है नहीं कि सीधा नींव खोदी और पत्थर डाले एंड वी आर स्टार्टेड बिल्डिंग अवर हाउस, ऐसा नहीं करते, राइट? हम लोग पहले एक पेपर पे कुछ नक्शा वगैरह ड्रॉ करते हैं, करेक्ट? या। कि कहाँ रूम बनेगा, कहाँ वो बनेगा। तो वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिज़ाइन। तो सॉफ्टवेयर टर्म में हम लोग डिसाइड करते हैं कि अच्छा हमको ये फीचर चाहिए, तो फिर उस पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं कि हाँ भाई ना एक इसमें एक ये चैटिंग वाला फीचर ये ऐसे ऐड करेंगे, इसको ऐसे ऐड करेंगे, एप्लीकेशन कैसी दिखेगी उसका पहले एक कुछ फ्लो जैसा कुछ बनाते हैं कि ये ऐसी एप्लीकेशन दिखेगी। उसके बाद में एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जब ये रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो गई कि हाँ भाई ऐसी चाहिए, उसका एक बेसिक वो ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, डिज़ाइन, फिर होता है डेवलपमेंट स्टार्ट। सिमिलरली जैसे जब घर बनते हैं तो नक्शा वगैरह बन गया, तो फिर एक्चुअल काम स्टार्ट होगा, जहाँ पे नींव बनाई जाएगी, फिर दीवारें खड़ी की जाएगी, छत बनाई जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे फिर जो हमने डिसाइड किया था वैसे वैसे कोड लिखा जाएगा। ठीक है? या। ओके, तो वहाँ पे फिर होता है डेवलपमेंट स्टार्ट। एक बार जब डेवलपमेंट हो गया, तो हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन को करते हैं टेस्ट। जैसे आपने एप्लीकेशन तो बना दी, बट इसको नॉर्मल यूजर्स के लिए अवेलेबल करने से पहले हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, करेक्ट? कि जो हमने सोचा था ये एप्लीकेशन वैसे काम कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे अगर हम लोग का एप्लीकेशन बनाई है तो हम लोग उसको किसी फ़ोन में इंस्टॉल करके देखेंगे, मैसेज भेज कर देखेंगे सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। और अगर सब कुछ सही चल रहा होगा तो हम लोग उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देंगे, ताकि एंड यूज़र सारे बाकी सारे यूज़र जो है उसको यूज़ कर पाए। फिर उसके बाद में उसकी मेंटेनेंस की जाएगी। एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी डजंट मीन कि हाँ भाई चलो सारे डेवलपर को निकाल दो, सारी टीम खत्म कर दो, नो। फिर में मेंटेनेंस भी होती है, क्योंकि जब एक्चुअल यूजर यूज करेंगे तो कुछ इशू आएगा। या सपोज करो हमने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को बनाया कि उसमें सिर्फ वो, जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स को देख लो। अगर नेटफ्लिक्स पे 100 लोग एक साथ मूवी देखें तो फाइन, अगर 1 लाख लोग आगे तो क्या होगा? तो एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। तो वहाँ पे मेंटेनेंस चाहिए एप्लीकेशन को। तो फिर जो टीम बैठ के मेंटेनेंस करती है, डेवलपर भी चेक करते रहते हैं कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो ये सब एक पूरी SDLC प्रोसेस होती है। और वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था, ये जो प्रोसेस थी वो टॉप टू बॉटम होती थी। जैसे सबसे पहले आई रिक्वायरमेंट्स, कि भाई हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि क्लाइंट सारी की सारी चीज़ें जो है पहले ही हमको बता दे कि हाँ भी मुझे ये चाहिए, वही चाहिए, वो चाहिए। फिर हम उस पर काम स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ यहाँ पे आए,
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम लोग यहाँ पे आ गए, हम लोग एप्लीकेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर हमको व्हाट्सएप के जो फाउंडर है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, मुझे तो इसमें ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। तो हम बोलेंगे अरे यार, ये सब चीज़ तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी यहाँ तक बना चुके हैं। तो हमको फिर से तुम वापस हमको रिक्वायरमेंट दोगे, फिर से हमको करना पड़ेगा डिजाइन, फिर से रीडेवलपमेंट करेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है, करेक्ट। Yeah. तो इसके लिए आजकल जो इसकी जगह पे जो SDLC मेथड यूज होता है वो होता है एजाइल। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस टर्म, एजाइल मेथोडोलॉजी? यस। ओके, तो अजाइल मेथड में क्या होता है? हाँ, अजाइल मेथोडोलॉजी में अगर आप देखो तो एग्जैक्टली सारी चीज़ सेम हो रही है, बट एजाइल जो है बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू वाटरफॉल। तो अजाइल में देखो क्या होता है, सबसे पहले हमने प्लान किया कि हम कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, तो हमको रिक्वायरमेंट मिलेगी प्लान में। यहाँ पे होगी डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्ट, डिप्लॉय एंड मेंटेन। चीज़ें सेम टू सेम है, बट वो मतलब अजाइल वे में चलती है तो चीज़ें बहुत फास्ट मूव होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग अजाइल में क्या करते हैं, हम लोग जो भी एप्लीकेशन का जो काम होता है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में कर देते हैं डिवाइड। कि जैसे ये हो गई डेव टीम हो गई, एक हमारी क्यूए टीम हो गई, एक हमारी डेवऑप्स टीम हो गई। ठीक है, ऐसे उसमें सारा काम को डिवाइड कर दिया, और वहाँ पे फिर काम हो रहा है स्प्रिंट में। तो जैसे जब भी व्हाट्सएप एप्लीकेशन बननी होगी, तो पहले 15 दिन में हम लोग उसका वो लॉगिन वाले फीचर पे काम करेंगे। तो वो लॉगिन वाले फीचर पे काम किया, तो अब अगर अगली बार कुछ नई रिक्वायरमेंट आती है, तो हम लोग मतलब वाटरफॉल में सारी चीज़ें एक साथ हम लोग पहले ले लेते थे कि हाँ भाई, जो भी चीज़ें वो पहले ही मुझे बता दो, जो रियल टाइम में पॉसिबल नहीं है, राइट, करेक्ट। तो इसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ एजाइल। तो एजाइल में अ, हम लोग स्प्रिंट में काम कर रहे हैं, और एक स्प्रिंट होती है 15 दिन की, जहाँ पे हर एक डेवलपर को कुछ ना कुछ स्टोरेज असाइन की जाएगी। फिर डेवलपर उस पर काम करेंगे, और डेली वो लोग सिंक करेंगे आपस में सारी टीम्स कि हाँ भाई, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने वो काम किया, ये मेरे को ब्लॉकर है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो मतलब उसे बोलते हैं अपडेट देना वो। और वो जो जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं स्क्रम मीटिंग। सो फार सो क्लियर गाइज। Yeah. हम्म। तो क्योंकि वाटरफॉल बहुत स्लो था, तो एजाइल इंट्रोड्यूस हुआ, और एजाइल से चीज़ें बहुत फास्ट हो गई, और ट्रैक करना भी आसान हो गया कि कौन किस पे काम कर रहा है। क्लियर। तो ये हो गया मेथोडोलॉजी। तो पहले था वाटरफॉल, उसके बाद में आज जो चलता है सबसे ज़्यादा, वो जो SDLC के प्रोसेस पे आज जो चलती है वो है अजाइल। ठीक है, नाउ बैक टू डेवऑप्स। ठीक है, तो नाउ हमने आई थिंक अब तक ये डिस्कस किया, तो लेट्स गो थ्रू ऑफिशियल डेफिनेशन। व्हाट इज डेवऑप्स? DevOps is compound of development and operations. It is a union of people, process, and technology to continually provide value to customer. It means DevOps combines multiple people means different teams, dev team, QA team, build team, and different process and technologies, so that we can provide value to our customer. Providing value to our customer means, because if customer is using our application, he is paying to us, so in terms of that we should provide him good value. And DevOps aims to shorten the system development life cycle, the system or software development life cycle. तो जो टाइम पहले लगता था सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, डेवऑप्स कोशिश करता है कि वो टाइम कम से कम हो पाए। क्लियर। It increases an organization's ability to deliver applications and services at high velocity. जैसे मैंने बताया कि DevOps और Agile साथ साथ काम करते हैं, तो अगर कोई कंपनी DevOps और Agile यूज करती है, तो वो कंपनी अपनी एप्लीकेशन को जल्दी जल्दी कर पाएगी डिलीवर, एज कंपेयर टू जो कंपनी
DevOps और Agile नहीं यूज करती है. It also evolve and improve products at a faster pace. अगर हम चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी फास्ट डिप्लॉय कर पाएंगे तो हमारे पास टाइम रहेगा चीज़ों को और इम्प्रूव करने का. So saving time is equal to saving money and saving cost. Clear, guys? Have any questions? Provide high software quality through automated testing and static code analysis. So in DevOps, we enable automated testing. It means no human is testing your application. The DevOps is, will run the test cases against your applications to make sure that your application works fine. Because if human tests the application, there will be chances of error. So automated testing will make sure that you are providing high quality software to your end users. Any question here, guys? Abhay, Harsh, Mahipal, I see new guy, Faizan. No, sir. Hey, Faizan. Okay, so that is the basic definition of DevOps. Now, how it works? So, first, okay, these are the DevOps maturity states. So, first of all, the requirement gathering, then coding, then building the applications. Building means, let's say a developer has written 100 of files, so we will build all those 100 files to create a single package. That will be part of this build and integrate. Then we will test that application. Then we will release and deploy the applications, and then we will maintain that application. So this is it. So under Agile, till here is covered under Agile, the requirement gathering, coding, and building. Then in DevOps, you will be hearing three terms: continuous integration, continuous delivery, and continuous deployment. Have you ever heard about the things like CI/CD? Okay, if not, CI means continuous integration and CD means continuous delivery or continuous deployment. So let's cover. Continuous integration means as soon as developer pushes their code, then the build should be start and the test should be start. Means we should have some kind of automation so that if user is pushing any code, then pipeline or the automation will build the application and it will test the application. In continuous delivery, after running this process, it will generate some artifact. Let's say for example, if you guys know that whenever you build Java class, Java file, it creates a class file. Do you know this? No, sir. Okay, so this is known to okay. Okay, so at least you know what is the meaning of compile, right? Compilation. Compilation means converting your source code into machine code. Let's say when we write the code, we write code in normal English like for, if, else, correct? You know this? For loop, if, else. So all those are the English statements. So when we compile the code, all the source code will be converted into machine language that computer can understand. That is happen in the build. After build, our code will convert into machine language, and then we will deliver that packages to our temporary server. Okay, sorry guys. So then we will have continuous deployment. In continuous deployment, we will deploy the package those are generated in the build process
to our actual environment. Actual environment means where our application actually deploys. So all these processes together known as the DevOps. So let's say, no, I have this example here. This is the project structure without DevOps. So here what will happen? So we have a client, we call it product owner. He will give us the requirement and he will create the ticket in Jira. I hope you know about Jira. If not, Jira is a agile tool where we create tickets or work for the team, and then we assign the work to the team. Okay. So and then this is our developer team. They will pick up the stories. So whatever work we create in Jira, we call it as a story. Okay. So the build team will pick up the stories and they will start writing the code. While writing the code, they can write code by using any of these language like PHP, Angular, Python, or any of the language. And they will write the code, and after writing the code, they will give this code to the build team. So there is a build team, and they will give them the source code. Maybe they will mail it, or they will to the pen drive, or they will put to GitHub, and via GitHub, the build team will pull the code. So here, the build team will run, will compile the source code and will create a deployable package. Because whenever we build our application source code, it generates some packages. We call them artifact as well. So you call it package or artifact, both are same. So then the generated package will be handed over to QA team. Here QA team will run test cases against the application to make sure that application is working as expected. Then if everything looks good, they will give that tested package to the ops team, and here they will deploy it on the servers. So here we need a build development team, a build team, a QA team, and the series team or the ops team. Is this diagram clear, guys? Yeah. Sure. Yeah, sure. So all like Faizan, Harsh, Mahipal, you all guys clear? Yes, sir. Okay. Now, what is the issue here? This is not automated actually. So, say if developer has written all of the code, but until they inform the build team will not get to know that whether the work has been done or not. Also, the build team, let's say while building the application, they got some issues, so they will have to reach out to build team that hey, this file is not getting compiled and it is giving this issue. Then the build team will get the code and they will fix the issue, and then again they will hand over the new code to the build team, where build team will again try to build it to make sure that there is no error. So that is a manual process. After building, they will give the this package to QA team. So QA team here, QA team is also human team. So they will test the application manually. So whenever something happen manually, it will require lots of efforts, lots of time. So and after the testing is done, the application will be deployed to the server by the ops team. So this is a very lengthy process. Also, it requires lots of team member and lots of time. Now, let's talk about. I will show you an example with DevOps enabled. But before going there,
let's go through some definitions. So whenever you heard DevOps word, you will also be hearing this word CI/CD as part. So CI/CD is the combination of two words CI and CD. CI means continuous integrations, where team members integrate their work frequently, each integration verified by an automatic unit testing, code quality analysis, and corresponding build created. So in this quick, continuous integration, team member will integrate their code all together, because there could be 10 developers. So if 10 developers are working on same thing, then at the end they need to merge all of their code. So under integration, they will merge all of their code into one code base. Then each integration, so whenever teams are merging their code into main branch or something, before that we need to make sure that the code that is getting merged into main branch is not having any issues. So to make sure that, we will run our pipeline to test the unit test, code quality analysis, and this will help us to resolve or detect the error at very early stage. That is CI, continuous integration. Clear, guys? Okay, so that is CI. Yes, sir. Then continuous delivery. So code changes are automatically built, tested, and prepared for production release. So under continuous delivery, we are building the code, we are testing the code, and we are making it ready for the production environment. See, guys, there is a difference. We are not deploying the code to production. We have make sure that this code looks good. We have built it and we have tested, but it is still not deployed. It is still waiting for deployment. Clear? And in continuous deployment, we will actually deploy the tested code to production environment. So that is CI and CD: continuous integration, continuous delivery, and continuous deployment. Any question, guys? No, sir. So if someone asks you what is difference between continuous delivery and continuous deployment, what will be your answer? In continuous delivery, it is prepared for production release, not deployment. And in continuous Correct. deployment, it is deployed to Yeah. production. The actual deployment will happen in this CD. deployment CD. Yes. Yeah, deployment. Although there is a no similarity, because CD means continuous delivery and CD means continuous deployment also. Right? हेलो Yeah. क्या रहा तुम लोग Any question here, guys? हाँ No, sir. Okay. अच्छा हाँ ठीक है हाँ वो तो रैंडम ही आएगी Okay. अच्छा So, who is talking? वो इश्यू में है हम्म, हाँ Okay. So I showed you an example where DevOps was not enabled. Now I will show you an example where DevOps is enabled. So let's see. This is a project setup with DevOps enabled. If you remember the previous diagram, let me show you. So that is the previous diagram without DevOps. And this is the diagram with DevOps. So here we have the product owner, this owner who will give us the requirement that what need to be created, and he will create the task in this Jira board. Jira board is a tool which we use for issue tracking. We'll go over it. Okay, then this is the development team. They will pick up the story, they will pick up the work, and they will start writing the code.
by using these technologies like PHP, Angular, Java, Python. It could be any language. It doesn't matter. And as soon as they are done with their work, they will push their code to version control system like GitHub. It could be GitHub or Bitbucket. GitHub and Bitbucket are same only. Okay, they are. It's like how Tata and Mahindra. They both are cars only, but different companies. Similarly, GitHub and Bitbucket are different companies, but the product is exactly similar. So they will push their code to, let's say, GitHub, and as soon as they have pushed their code here, then this is a Jenkins. Jenkins is an automation tool, but forget about it. This is, let's say, this is our DevOps. This will get to know, okay, there is something new in the repository. So he will pull the new code, he will build the code, he will run the test cases, he will perform the automated static analysis. Then, after verifying everything, that building the application and testing it, if all the test cases passes, so yeah, then it will deploy the code to the production. All the things it will do automatically. It will get to know that, okay, there is new change in the code. There is an integration between GitHub and Jenkins, so it can track that, okay, there is new thing coming or not. And whenever there is a new thing coming, new code is coming, it will automatically start to build it, test it, and deploy it. So if you compare now this with this option, this is fully manual. So writing code, then giving the code to the build team will build it and then give it to QA team, then QA team will test it and they'll give it to for the production deployment. This is a lengthy process because let's say the build team has written their code on Friday, okay, so they will now go to home. They will say, okay, we'll talk to the build team on Monday. So, but if there was DevOps, if there is DevOps, then they will write the code even on Friday and they will push their code to GitHub and then they can go to home because Jenkins can do the remaining work automatically. Clear, guys? Guys, is it clear to you now? Yeah. The difference between a project without DevOps and project with DevOps. So if you see, now we don't need here build team because the application can be built by Jenkins itself. He can even run the test cases. And okay, we need a testing team, but let's say previously we were needing, let's say, 5 tester to test the application, but this time we will needing only 1 tester because almost majority of testing is done by Jenkins automatically. But you will still need one senior tester who can validate, okay, this is looks good, this looks good, this looks good. Once getting approval, then the things can be deployed to production. Is it clear? So instead of 5 testers, now we need only 1 tester. We don't need development team here because Jenkins can automatically build it. Clear, guys? Guys, do we have any questions? Okay. Okay. So that's how DevOps works. And as I mentioned, what was previously using, we were using waterfall model. That is very lengthy. So nowadays nobody uses waterfall model. We use DevOps only. Now, what is the market of DevOps? Like as when you are trying to learn DevOps. So how DevOps can help you? We know that DevOps can help organizations, but how DevOps can help you? Because everyone wants growth. So if I give you a rough estimate, the lowest salary for DevOps engineer is this, and the highest salary for DevOps is this.
considering a moderate experience of, let's say, no, 4 to 5, 6 years of experience. So that's the potential DevOps has, for your growth. And if you have more and more experience, let's say 10 years, then this number could even go to 60, 70, 80, or 1 year. So that's a generalized. So it's the average salary for DevOps engineer is around 8 lakh. Okay. Why companies are paying so much for DevOps engineer? Because DevOps person can enable companies to deliver their application on fast basis. They can increase their speed. So that's why there is a lot of demand of DevOps engineer in the market. Any question here, guys? As I am from non-IT background, can I go for this? Yeah, you can, Mahipal. So non-IT means I'm from accounts background. accounts. So you are currently working in accounts. Yeah. Yeah, you can. So we have designed this course in a way that we will be teaching DevOps from zero. We don't assume that you know anything. We assume that you don't know. You know zero about DevOps. So everything will be from scratch. And Okay. if you do continuous practicing for whatever we learn here, then yes, after this training you can at least show experience of 2 to 3 years in DevOps, and you can start your career in DevOps. Yeah. Any more question here, guys, before we wrap? So today we covered the DevOps history, and the difference between a DevOps and non-DevOps project, and the market of DevOps, how the market in terms of monetization is. So all these things we have discussed. Tomorrow we will see what are different tools are there in DevOps and how they all work together. Any questions till here? If you have any questions, feel free to drop your questions in our group chat. So whenever I get in time, I can answer your questions. For now, you just need to worry about what is DevOps, what is the meaning of Dev and Ops, what is the meaning of CI and CD, what is SDLC, what is Waterfall model, all those things. I will share this my team will share the recording with you, so you guys can go to the recording. And in tomorrow's session, we will be seeing what are the tools, different tools in DevOps, where they fit in DevOps lifecycle. And so that again will be a theoretical session, and from then onwards we will start from actual DevOps tools like Linux, GitHub, and all those things. Okay, guys, if you don't have any questions, we are good to drop. Thank you. Okay, guys, see you tomorrow then. Bye bye, same time. Okay. Yeah, bye bye.